Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 72 as I'll be continuing with exercise 2 of unit 18, simple past tense. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page number 72 as I'll be continuing with exercise 2 of unit 18, simple past tense. Students, in my last video I was explaining exercise 2, that is rewrite the sentences changing the verb into simple past form, and I had explained and written the first 9 sentences of this exercise. Now today, first I will revise these 9 sentences and then I will start with the 10th one. So exercise 2, page number 72 of your English grammar book. Rewrite the sentences changing the verb into simple past form. The first one. The guard hears a strange noise. Now what we have to do? First of all, we need to identify and underline the verb. So the verb in the sentence is here. Please underline the verb hears. And then we will change the verb to the past form. That will become heard. And the sentence will be, the guard heard a strange noise. The second one, the vase falls off the table and breaks into pieces. Now, first of all, we will identify and underline the verbs in sentence number 2. And the 2 verbs are falls and breaks. बेटा जो 2 verbs हैं इसमें कौन से हैं? Falls and breaks. The past form of falls is fell and the past form of breaks is broke. So our sentence will be, the vase fell off the table and broke into pieces. Then the third one, the judges appreciate the theme song presented by us. The verb in this sentence is appreciate, so please underline appreciate, and the past form of appreciate will be appreciated. So our sentence will be, the judges appreciated the theme song presented by us. The fourth sentence, I discard my old clothes. The verb in the sentence is discard and the past form of discard is discarded. We'll add ed to the verb discard, so the past form is discarded. And the sentence will be, I discarded my old clothes. The fifth one, Astha goes to Yamuna Sports Complex for swimming. The verb is goes and the past form of the root form of the verb go is went. So our sentence will be, Astha went to Yamuna Sports Complex for swimming. The sixth one, they find many beautiful shells at the sea shore. The verb is find and the past form is found. So our sentence will be, they found many beautiful shells at the sea shore. Then the seventh one, the baby cries loudly. The verb in this sentence is cries and the past form of the word cry is cried, C-R-I-E-D, cry. So our sentence will be, the baby cried loudly. The eighth one, we know the right answer and the verb in this sentence is no. Please underline no. And the past form of no is knew. So our sentence will be, we knew the right answer. Then the ninth one, children read storybooks in free period. Now children, the verb is R-E-A-D, read, and the verb R-E-A-D, read, the spelling remains same in all the tenses, whether is it in the root form or in the past tense.
रीड ही रहती है, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. रीड हम प्रेजेंट टेंस में प्रोनाउंस करेंगे, एंड पास्ट टेंस में विल बी प्रोनाउंसिंग इट एज रेड. READ को हम रेड पढ़ेंगे, एंड प्रेजेंट टेंस में READ को हम रीड पढ़ेंगे. द स्पेलिंग विल रिमेन द सेम इन ऑल द टेंसेस, बट द प्रोनाउंसिएशन विल डेफिनेटली change. So our sentence will be children read storybooks in free periods. So now I'm going to start with the 10 one. And the 10 sentences, you close the door. You close the door. The verb in the sentence is close. Verb क्या है बेटा? Close. And close का past form is closed. Close का past form क्या है? Closed. We need to add ed. So our sentence will be, you closed, underline the past form, you close the door. So you close the door, the past form is you close the door. तो बेटा close का past tense क्या है? Closed. Close का past tense क्या है? Closed. You close the door, past form is you close the door. Now with this we have finished our exercise 2, and in exercise 2 we have to change the sentences to the past form. So for that you only need to remember is that first of all you need to underline the verb, identify the verb, underline it, and then you need to change the verb to the past form, है ना. आपको सबसे पहले बेटा verb को पहचानना है, underline करना है, और फिर आपको उसको past form में change करना है, and the remaining sentence will remain the same. Only the verb will change to the past form. बाकी का पूरा sentence as it is रहेगा. अगर ये याद रहेगा बेटा तो फिर कोई गलती नहीं होगी, है ना. तो अभी आपको sentence को past form में change करना, I hope सबको समझ में आ गया होगा. Now I'm going to start with the negative sentence, है ना. That simple past tense में how can you frame negative sentences in simple past tense? Fine. Now for this you need to understand one thing, है ना. अभी हम negative sentences पढ़ेंगे in simple past tense, है ना. अब सबसे पहले तो what are negative sentence, है ना. जिस भी सेंटेंस में बेटा not लगा हो, जिस भी सेंटेंस में not लगा हो वो negative sentence. जिस भी सेंटेंस में not लगा है वो क्या हो जाता है? negative sentence. and simple past tense में बेटा जो negative sentence हम फ्रेम करेंगे उसका एक फॉर्मूला याद रखो, है ना. सब्जेक्ट के बाद did not plus the root form of the verb. ये आपको याद रखना है कि जो भी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल होगा, है ना. सो आपको सब्जेक्ट के बाद did not plus the root form of verb after the subject, है ना. सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो that doesn't make any difference, है ना. आपका जो भी अनुवर्ती सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस, the one who's performing the action is the subject. जो भी एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है. ये तो सबको पता है बेटा, है ना. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है. एंड नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद क्या बेटा, आपको बस ये याद रखना है did not, सब्जेक्ट के बाद did not
और जो भी आपका पास्ट फॉर्म सेंटेंस में दिया उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट करना है ना। नाउ आई explain this with an example. Let's take the sentence, the guard heard a strange noise. Suppose this is the sentence. अब आपको आया है कि इस सेंटेंस को यू नीड टू मेक इट नेगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, है ना, सबसे पहले हमने जो भी किया था पास्ट फॉर्म में, हमको सबसे पहले वर्ब को पहचान के और अंडरलाइन करना है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस एंड अंडरलाइन इट। सो द गार्ड हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, इसमें सब्जेक्ट, अरे वर्ब कौन सा है बेटा, वर्ब इज हर्ड, वर्ब कौन सा है, हर्ड, एंड सब्जेक्ट क्या है जो एक्शन करता है, दैट इज द गार्ड, है ना। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का और वर्ब क्या है। वर्ब को आपने अंडरलाइन कर दिया, हर्ड, है ना। अब हर्ड में डी लगा है, दैट इंडिकेट्स कि ये पास्ट फॉर्म में है। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, रूट फॉर्म में चेंज करना है ना। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट, द गार्ड, हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, द गार्ड। आफ्टर द सब्जेक्ट हमें क्या लिखना है, डिड नॉट, आफ्टर द सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, है ना। पास्ट टेंस में जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद हमें क्या लिखना है, ये तो पास्ट फॉर्म में डी लगाए, इसको हम चेंज करेंगे रूट फॉर्म में। तो हर्ड का रूट फॉर्म क्या है, हियर, ये हमने किस में चेंज कर दिया, डिड नॉट के साथ वर्ब को हमने रूट फॉर्म में चेंज कर दिया। सो द गार्ड डिड नॉट हियर, और उसके बाद द सेंटेंस एज इट इज, तो क्या होगा, द गार्ड डिड नॉट हियर a strange noise. Clear? The guard did not hear a strange noise. I hope ये कंसेप्ट सबको अभी समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट प्लस जो भी वर्ड पास्ट फॉर्म में है उसको आपको किस में चेंज करना है बेटा, रूट फॉर्म में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर कि सब्जेक्ट, आफ्टर दैट डिड नॉट, देन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। सो डिड नॉट वर्ब जो पास्ट में है उसको आप रूट फॉर्म में करोगे एंड द रिमेनिंग सेंटेंस, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस इज रेडी। सो यू प्लीज रिमेंबर दिस कि फॉर चेंजिंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस क्या फॉर्मूला हमको करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस जो वर्ब पास्ट फॉर्म में उसको हमें वापस किस में लेके आना है, रूट फॉर्म में, एंड देन द रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। क्लियर? नाउ I'll explain some more examples so that the concept becomes clear to you. Fine? Negative sentence कैसे change करते हैं? Now, examples. The first one. Let's say the sentence is I opened the door. Fine. Now you are supposed to change this sentence into negative sentence. So what is the first step? First is you will identify and underline the verb in this sentence. So I opened the door. Verb कौन सा है? Open. Just underline the verb open. Now what you need to remember is once you underline the verb, it will immediately click you that if you want to change this into negative sentence, we need to bring back the verb to its root form. So what you will do, आप इसका open का बेटा root form is what? Open, है ना? ed open is the root form
और इसमें हम ed लगा देते हैं तो दैट बिकम्स द पास्ट फॉर्म. सो वी नीड टू रिमूव द ed टू ब्रिंग बैक टू इट्स रूट फॉर्म. फाइन. सो आपको उसके लिए बेटा सबके पास्ट फॉर्म और रूट फॉर्म्स थारो होने चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस. सो आई सब्जेक्ट है. देन फॉर्मूला क्या था? आफ्टर द सब्जेक्ट डिड नॉट plus the root form of the verb and then the remaining sentence. So I did not, then the root form of the verb opened is open. I did not open the door. ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, है ना. ये हमने किस में इसको चेंज कर दिया? नेगेटिव में. सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड इज यू नीड टू identify and underline the word. Once you have identified and underlined the word, then आप क्या करोगे? उसको root form में लाओगे. उसके पहले आप did not लगाओगे and then the remaining sentence as it is. So I did not open the door. This is the negative sentence. Now the second sentence is the mechanic repaired the car. Now this is the sentence and we are supposed to change this into negative sentence. So what are we going to do first? First and foremost we need to identify and underline the word. So what did the mechanic do? Now the easiest thing to identify and underline the verb is कि आपको बेटा देखना है कि उसमें एक्शन वर्ड कौन सा है. जो भी हम एक्शन करते हैं दैट इज द वर्ब. जो भी हम एक्शन करते हैं वो वर्ब होता है. सो द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार. इसमें जो एक्शन है दैट इज रिपेयर. सो now if you want to change this into the negative sentence, what are we going to do? First of all we need to identify and underline the verb. वो हमको repaired मिल गया है. Now repaired का root form of the verb क्या है? That is repair. हम इसमें से ed हटा देंगे. Fine. So अब the subject क्या है? Subject है the mechanic. The mechanic. Now अब हमें पास्ट टेंस में जब भी नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है तो क्या करना है? हमें आफ्टर दी सब्जेक्ट क्या लिखना है बेटा? डिड नॉट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. अब रिपेयर्ड का रूट फॉर्म क्या है बेटा? दैट इज रिपेयर. सो द मैकेनिक डिड नॉट रिपेयर दी कार. एंड चिल्ड्रन ऑलवेज अंडरलाइन, है ना. आप जब अंडरलाइन करोगे वर्ब को तो आपको इमीडिएटली क्लिक करेगा कि जब आपने सेंटेंस फ्रेम कर लिया कि उसको हमें रूट फॉर्म में लाना है. फिर व्हेन यू राइट द नेगेटिव सेंटेंस यू कैन ऑलवेज कंपेयर कि हैव आई चेंज्ड इट करेक्टली, है ना. हैव आई चेंज्ड द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू द रूट फॉर्म. हैव आई एडेड डिड नॉट और नॉट. तो ये सारी चीजें जब आप अंडरलाइन करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगी एंड आप इमीडिएटली उसको रिवाइज करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो भी किया है वो ठीक किया है कि नहीं. फाइन. सो द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपको नेगेटिव सेंटेंस जब भी फ्रेम करना है तो सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई पहचानना आना चाहिए. सो वंस यू आइडेंटिफाई प्लीज अंडरलाइन द वर्ब. देन व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्जेक्ट plus did not plus the root form of the verb and the remaining sentence. Your negative sentence is ready. Fine. Now one more example. He spoke against you. Now this is the sentence. Now you need to change this into negatives. So first of all, what are we going to do? You are going to identify and underline the verb. And what is the verb? The verb is spoke, है ना. अब spoke past form में है इसीलिए इसको हमको root form में लाना है. तो spoke का जो root form है that is speak. So our sentence will be he subject है ना. He
did not speak, he did not speak against you. सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वर्ड को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन किया, देन आपको ये इंडिकेट करेगा कि अब आपने वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ यू नीड टू ब्रिंग बैक द वर्ड टू इट्स रूट फॉर्म. अब इस वर्ड को आप रूट फॉर्म में लाओगे एंड उसके आगे आपने क्या लगा दिया, डिड नॉट, है ना. सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही डिड नॉट स्पीक अगेंस्ट यू. ये किस में हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में. सो द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपको वर्ड को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, देन ब्रिंग बैक द वर्ड टू इट्स रूट फॉर्म, उसके आगे डिड नॉट ऐड कर देना है ना. बिफोर दी वर्ब आपको क्या ऐड करना है, डिड नॉट, है ना. इररिस्पेक्टिव कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल है, ये आपको कुछ भी नहीं देखना. आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद डिड नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द रिमेनिंग सेंटेंस. सो योर नेगेटिव सेंटेंस इज रेडी. फाइन. नाउ अनदर एग्जांपल. If you know this, you easily frame the negative sentence. Now, the fourth sentence is, the watchman came on duty. So, what are you supposed to do first? You are supposed to identify and underline the verb. तो verb क्या है? Verb is came. Now, the verb came is in the past form. Now, what are you supposed to do? You are supposed to bring back the verb to its root form. Underline क्यों किया है? So that it reminds you, you need to change the verb to the root form. और उसके पहले उसमें हम क्या ऐड करेंगे? उसमें हम did not add करेंगे. So our negative sentence will be, subject क्या है, the watchman, जो एक्शन करता है जिसके बारे में बात हो रही, that is the subject. So the watchman, subject के बाद did not, the root form of came is come. So the watchman did not come on duty. This is the negative sentence. So the things you need to remember while changing the sentence in past tense into negative sentence, first of all, identify and underline the verb. Then you need to remember that you need to bring back the verb to its root form, add did not before the verb, then the subject did not plus the root form of the verb and the remaining sentence. So your negative sentence is ready. Now, the next sentence. Our team won the match. Our team won the match. वर्ब कौन सा बेटा? जो भी एक्शन वर्ड है, that is one. Fine. And children, I've seen many of you pronouncing this as incorrectly. इसको one नहीं बोलते, one, है ना? जो only one वाला pronunciation है, that is the same pronunciation. जो one इसको बोलते हैं, WON को भी one बोलते हैं. ये आपको बेटा याद रखना है. only one का जो pronunciation है, the same pronunciation, same sound is for WON, one. So our team won the match. Verb क्या है? One. सब्जेक्ट क्या है? आर टीम. और हमारा फॉर्मूला क्या है? टू हाउ डू वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस चिल्ड्रन? फर्स्ट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है हमारा? आर टीम. देन वी नीड टू ऐड डिड नॉट. द रूट फॉर्म ऑफ वन इज विन. सो अंडरलाइन. Our team did not win. Then the remaining sentence as it is, the match, and your negative sentence is ready. So our team did not win the match. Clear? Now,
Let's take another example. The child cried loudly. Fine. Now suppose this is the sentence and you are supposed to make this sentence negative. So first step क्या है आपका? Identify and underline the word. Word क्या है? Cried. And now the next step is, once you have underlined the word, you know that you need to bring back the verb to its root form. So what are you going to do? You write the subject. Subject क्या है? The child. After that you write did not. Then the root form of cry is cry. Underline it loudly. So the child did not cry loudly. Cry का क्या कर दिया? Cry. Did not add कर दिया. Root form of the verb से after the subject did not plus the root form of the verb, then the remaining sentence. Fine. So I hope now you all can frame negative sentences. So let's start our next exercise, which is based on negative sentences in past tense. Now, exercise 3. Make these sentences negative. The first one has already been done for you children. Fine. So I'll explain the first one first. है ना? First वाला already book में solve किया है. But then you need to understand that how you have to change this into negative. So the first sentence is the trains arrived. The trains arrived. The station on time. ये आपका सेंटेंस है और आपको बेटा इसको किस में चेंज करना है? नेगेटिव में. सो आप क्या करोगे? You need to change this into negative sentence. So first of all, what are you going to do? You are supposed to identify and underline the word. The trains arrived the station on time. Now, subject क्या है? The trains. Arrived क्या है? Word. Arrived is the word and subject is the trains. So हमारा formula क्या है? After the subject, we are supposed to write did not plus the root form of the word, then the remaining sentence. So subject क्या है? The trains. Then after the subject, what are we going to write? Did not. Then the root form of arrived. अब बेटा arrived में d लगाना है ना? इसका रूट फॉर्म, इफ यू रिमूव दी डी, रूट फॉर्म क्या हो जाएगा? अराइव. दिस इज द रूट फॉर्म. फाइन. सो इसके लिए आपको बेटा रूल्स पता होने चाहिए हाउ टू फॉर्म द पास्ट टेंस. सो द ट्रेन डिड नॉट अराइव. The train did not arrive. In the book, children, at is missing. The train did not at. The trains did not arrive at the station on time. Misprint हो गया है. They have forgotten to add at. So you please add at. आप अपने सेंटेंस में add कर लीजिए. The trains arrived at the station on time.
Negative क्या हो गया? The trains did not arrive at the station on time. So please आप अपने पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में भी ऐड कीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में भी ऐड. इट्स अ मिसप्रिंट इन दी बुक. सो द ट्रेन्स डिड नॉट अराइव एट द स्टेशन ऑन टाइम. दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस. So with this children, I end today's video. That's all for today. I'll be continuing this exercise in my next video. Thank you students. Have a good day ahead.